if you're a PM, right, you need to build something which the founders are ready to fund, your developers are ready to build, and users are ready to use. Early days of Amazon, I'm not sure if they still follow it. They would keep a chair empty in a meeting, and that chair signified the user, right? लिंक्डइन पे सिर्फ 2 कारण के लिए जाओ जब तुम्हें अपने जॉब को लेकर डिप्रेस होना है. एवरीबडी ऑन लिंक्डइन हैज दिस फोटो. Your followers become your social currency. हसल वर्ड ही जो है ना, मतलब इट हैज जस्ट बिकम एन अब्यूसिव वर्ड नाउ. हसल कर रहे हो तो करो, बट रोमांटिसाइज मत करो. Everybody thinks that these people are self-made billionaires, but they haven't gone and fact checked. जेफ बेजोस का जो सीड फंड था $300,000 का, उसके पेरेंट्स ने दिया था. Welcome to the ADHD Developer Podcast, everyone. Today we have a special guest with us today who is also my friend. Let me introduce to you Ankit Bareja, who prefers to go by the name of Barry. Actually, I don't know if he prefers it, but I prefer to call him Barry. Hi, Barry, and welcome to the podcast. How are you doing? Hey, Sayan. I'm doing good. Looking forward to a great discussion. Okay, so we have a lot of interesting topics lined up. Let's start with some basic introductions so that the audience knows about like who you are and what you do. And before that, I'll just ask like a quick question from our Thinkly friends. Guys, are there any live questions that will pop up today, or shall we like discuss the format of the episode? So I think we'll wait for the live questions that are popping up later. So the format of the episode has changed a little bit. We shall be discussing on some topics. We also have typical intro ADHD style. We have decided to streamline the digressions that often end up happening. And anybody with ADHD or with ADHD friends would know that digressions are part of our life. So we have a specific time allotted to digressions today, in which we will discuss a surprise topic. Okay, back to you, Barry. Barry, do you want to give us a small introduction about yourself? Sure, Sayan. The first introduction would be that I've known you for the last, I think, 7 or 8 years. We met via a friend of ours who's my batchmate and your colleague, right? Currently, I'm the co-founder of PM School, which is, I mean, I would like to claim that we are India's largest platform for people looking to break into product management. We've been doing it for the last 4.5 years. We are bootstrapped. Prior to that, prior to PM School, I have about 8 to 9 years of experience in product management. Led teams at Tiny Owl back in 2015, 2014, 15, and 16. Then led product team and established the product analytics team from ground up at Games 24/7. Was also a senior PM at HDFC Life for a while. Was into InsurTech, and somehow I realized that there's a big space, a decent. I wouldn't say a big space now in hindsight, but there's a decently good space in upskilling people and making them into good product managers. That's why I jumped into creating PM School with a couple of my co-founders. And apart from that, talking about digressions, I am also a part-time or an amateur singer-songwriter as well. Yeah, I think that's the part you should talk more about. So yeah, so everyone just I'll just summarize your introduction just so that people who are joining us now or people who might have missed your modest introduction might know. Barry is an awesome product manager. He was a product manager way before it was cool. And he was into startups way before it was cool. आज तो यार हर दूसरा कोई अपने मतलब ग्रोसरी की दुकान को स्टार्टअप बोलता फिरता है. बस एक ग्रोसर्स के एस की जगह जेड लगा देता है. And we have grocers. So okay, no, I'm not talking about like Blinkit or Swiggy, Instamart or anything. Of course, I am talking about them. But yeah, so product management, right? And you were in that like a long time ago. I remember having those conversations. And yeah, you're right. Your biggest introduction is that you have been my friend for 7 or 8 years. That itself is like a sizable achievement. You have been. Yeah, that's an achievement for people who know you, right? Yeah, you've been able to tolerate that. So yeah, Barry, why don't you so this is an ADHD developers podcast, okay? So Sure. it's a very niche sort of an audience. So I just wanted to start off with like, first of all, we'll have people in our audience who are developers. It's not all developers, obviously, but there are lots of developers in our audience, and a lot of them have ADHD. And like I myself am an ADHD developer who has transitioned to some slightly different roles throughout their career. Why don't you start by telling us what exactly a product manager does? Because as a developer, and like even though I have like a product manager role overlaps in my life,
as a developer, I speak for all developers when I say that we do not know what product managers do. We ठीक है, just we don't know. Like nobody ठीक. knows what you do. We know that you go to meetings. We know that you write documents, and we know that you yell at us a lot. But beyond that, we don't really know what a product manager does. आई एम नॉट श्योर अबाउट द येलिंग बिट, बट हाँ यार वो एक तो मिसकंसेप्शंस बहुत हैं प्रोडक्ट Yeah. मैनेजमेंट के. जो बहुत बेसिक जो डेफिनेशन मैं सबको बोलता हूँ कि यू हैव टू हैव अ वेरी क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड. Second, you have to work along with people. Third is you need to have high agency, right? Everything apart from that, being a tech product manager or a UX turned PM or an analytics product manager, वो सब बात की बात है. पहले तो can you identify the problem? Can you identify an opportunity or a problem? Let's say you want to launch a new product. So can you identify an opportunity there? Are you good enough to identify? Have you seen certain patterns so that you see कि हाँ यार ये चीज करके देखते हैं, है ना? Second is getting working along with people. You have to work with people, right? It's not easy. It comes with experience. Third is high agency. Are you good at getting things done? These three definitions are what I look out for when I'm hiring for product managers and when I'm evaluating product managers. Everything apart from that is sort of a specialization. Once you spend 4 or 5 years in product management, you become a gaming product manager, so to say, right? You become, let's say, an AI PM, so to say, right? Those are all specialization which you can do once you spend enough time in the industry. But I know that a few developers have also joined this call. So yeah, essentially वही है, आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपॉर्चुनिटी, फिगर आउट करो क्या सोल्यूशन हो सकता है. जरूरी नहीं कि सोल्यूशन आपसे ही आए एज अ प्रोडक्ट मैनेजर. इट कैन कम फ्रॉम द डेवलपर एज वेल, इट कैन कम फ्रॉम अ रिस्क टीम एज वेल, इट कैन कम फ्रॉम द बिजनेस टीम्स एज वेल, इट कैन कम टॉप डाउन एज वेल कि यार CXO को भी एक सोल्यूशन आया है, राइट? he or she has probably thought of a solution. So are you able to translate those solutions into document? Let's say a document is just a form of communication. Are you able to communicate those solutions, right, which you would have thought or which you would have received from some stakeholder, to the tech team, to the design team, to all the stakeholders who are involved in that project, and see it through, right? Launching that feature or launching that product, and measuring the impact of your project, right? That's essentially in a nutshell if I were to describe product management. I could give you examples as well, but yeah. Okay, that makes sense. So, like, let me just understand what you said by asking you some questions about it. हाँ But हाँ before बिल्कुल. I get into that, I just want to like very quickly summarize. And I also want to I want to bookmark a point that you said about UX product manager versus data product manager. I'll get to that later. So essentially, you're talking about a product manager as somebody who is driving agreement. Essentially, like there's somebody who's framing the problem. They're putting the problem like in a box, because that box is probably the scope. They're defining that box and they're saying like, this is our problem right now, and then they're trying to like get solutions for that problem, and like be it from and be it they come up with that solution themselves, or they find different perspectives on that problem from the different Correct. involved teams, right? And once that problem is like, I mean, they're sort of there through the entire life cycle, because from what you're saying, like defining the problem, then Mhm. grooming the solution, and finally after the solution has been released, they're measuring those results also, like True. and then they're बहुत ज्यादा पार्ट जो है प्रोडक्ट मैनेजर का प्रॉब्लम डिस्कवरी में भी जाना चाहिए, राइट? तो प्रॉब्लम डिस्कवरी में भी PM हैज टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. इट कुड बी बाय टॉकिंग डायरेक्टली टू यूजर्स. इट कुड बी वाया प्राइमरी, इट कुड बी वाया सेकेंडरी डेटा, अगर आपने कोई सर्वे करा है या आपने कहीं कोई रिपोर्ट पढ़ी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ प्रोडक्ट मैनेजर शुड गो इनटू प्रॉब्लम डिस्कवरी एज वेल, because then yeah, it makes a job very easy when you are. yeah. In fact, जो भी नए PMs बनते हैं, APMs बनते हैं, उनको मैं ये बोलता हूँ, if you are transitioning into product problem discovery में, if you are spending enough time, you will automatically get the solution, right? I When you're agree. talking. I agree, very, very like hard agree with this, and I'll tell you why. Because I am sort of in a technical product management role at the moment. Like, I mean, it's a role. It's not my official designation. My official designation, I work with ML, but I drive a lot of product solutions because of my experience in business, Correct. and I did notice this. Like. And there is always going to be this tussle, because like the business wants, and the tussle is going to be like the business wants everything,
all at once, like, like that be everything all at once. Engineering just wants to start working on the solution ASAP because they are under delivery pressures and all of that. But yeah, I mean, taking time out and studying the problem. Like, and I think there was this famous quote from somebody. It's often attributed to Einstein, as most like smart quotes are attributed to Einstein. But I think it was probably Feynman or somebody else who said this, that if I had like 1 hour to save the world, I would take 55 minutes to define the problem, right? Something like that. So Exactly. you are Why? essentially saying, Ideally, you should. Obviously, in everyday, day-to-day life as a product manager, things go haywire, right? There's a lot of context switching. So you sort of, कई बार वो छूट जाता है वो purpose of, being a product manager, that you have to fall in love with the problem instead of, falling in love with the solution in your head. we get back to this also. So I want to go back to our earlier pin. So there are two pins, okay, that I have in my head. Like, okay, guys, for all the ADHD developers and even like non-developer ADHD people watching this, or like for posterity, if somebody ever watches this podcast. So one thing that tends to happen when you have ADHD is you have difficulty focusing your attention, you have difficulty like concentrating. And Barry, feel free to raise your questions about ADHD, because we'll be talking about that in like a section soon, about how like this comes into our role and our Sure. life. Uh-huh. So one good way to sort of, because when you're listening to somebody, it's very hard to listen to somebody if you have ADHD, because True. when I was listening to you, I was having all these questions come up in my head. So over time, what I've practiced is I've like got into this habit of like taking that question and like pushing it into a space and Hmm. trusting that I will remember. Or it True. doesn't happen a lot of times. A lot of times I have to write it down. But Correct. otherwise, what happens? Those questions keep bubbling up and it will prevent me from listening. So now I'm just telling you, because it's a show, it's a recorded medium. I can very comfortably say I want to discuss like the different kinds of product managers, like the UX and Correct. analytics, all of that. The other question I want to discuss with you is this, which is this is like, yes, there is this conflict part, like you're falling in love with the solution. How often does a product manager also end up being a project manager or a program manager? And can you differentiate between these three? For a lot of people in the audience don't know, because unfortunately the PM is the abbreviation for most of them. Today we know PM is mostly product managers and program managers are called PGMs, and project managers are just called project managers. So but I know there is a lot of overlap again in these three roles. So do you want to talk about that as well, Sure. shed some light? श्योर यार, मैं थोड़ा, मेरा आंसर थोड़ा सा ब्रूटल होगा, है ना? देखो यार, हाँ फंडा ये है कि मैं एटलीस्ट इंडिया के स्पेस की बात कर सकता हूँ. वी आर स्टिल, a lot of the startups, a lot of the companies are still startup, right? Growth phase or just starting up, right? Roles define आपके तब होने शुरू होते हैं जब आप you have reached a certain scale or a certain stage, when you need a product manager to only be involved in discovery and solutioning and writing PRDs, etc. But when you are in an early stage, you're doing everything. So hmm that's what I tell all the people who transition into product management from PM school, कि यार, product management is a role which is defined according to your company. It will be hmm different across companies. hmm You cannot compare a PM role at a Swiggy versus a PM role at a Google, which is, let's say, very mature company. Swiggy is still, I would say, a mature company, but compared to Google, obviously, not as mature as Google. But then if you have a Series A funded startup, right, a PM role will be very different there. So whatever it takes to get the job done is your role, right? As simple as that. At times, as a product manager in a very early stage startup, you'll have to own analytics as well. तो वहां पे आपको खुद से एनालिटिक्स करनी पड़ेगी, है ना? तो यू कैनॉट से कि यार, आई एम अ पीएम, आई नीड अ प्रोडक्ट एनालिटिक्स मैनेजर, आप हायर करो तभी हम करेंगे. ऐसा नहीं होगा. आपको खुद से सीक्वल सीखनी पड़ेगी, एक्सेल सीखनी पड़ेगी, करना पड़ेगा. यू कैनॉट, it's very difficult, right, when you're in a series A funded startup and saying that I don't want to do program management. This is the most common, uh, thing which people come back after a month and say कि यार अंकित, यहाँ तो मुझे प्रोग्राम मैनेजमेंट भी करना पड़ रहा है. Essentially, वो कहते हैं कि यार हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करना है, टाइमलाइन भी हमें ही मैनेज करनी पड़ेगी. तो वो करनी पड़ेगी एट अर्ली स्टेज स्टार्टअप. सो बट at very mature orgs, I'll take the example of Games 24/7. My job was mostly problem discovery, coming up with the solutions, and maintaining clarity across the stakeholders. Now, clarity could be in the form of emails, clarity could be in the form of Slack, clarity could be in the form of written documentation, writing a PR fac, writing a PRD, writing an analytics document, reporting requirement, etc. Program manager का जो काम था, that was more of aligning everyone
in various teams that they are up to date with their tasks, right? So if अच्छा. I'm a PM, there would be a program manager who's managing a program, right? Let's say this हाँ. feature becomes a program. So he's maintaining the timelines. Is the one who's liaising between amongst a product manager, developer, engineering manager, etc. So he एग्जाम्पल दे दे. बिकॉज पता है इट विल बी इजियर फॉर पीपल टू लिसन टू. अगर तू एग्जाम्पल देगा, मतलब 24/7 का एग्जाम्पल जो तू देगा ना, वो मच्योर और का हो गया, एंड उसके बाद एक स्टार्टअप का भी ले लियो. सो ठीक है. लाइक एग्जाम्पल ऑफ लाइक अ प्रोडक्ट, अ फीचर एंड अ प्रोग्राम इन दिस कॉन्टेक्स्ट. एंड इसमें प्रोजेक्ट क्या होता है एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहाँ आ जाता है. इससे देन वी विल लाइक segue a little bit before we get into a startup space. We will segue a little bit into how like ADHD comes into this balance. बट ठीक है. एक बार एग्जाम्पल दे दे छोटा सा. ठीक है. जैसे मान लो मैं किसी गेमिंग कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर हूँ. मुझे फीचर बनाना है. आई फिगर्ड आउट कि देर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट इफ आई वांट टू इंक्रीज रिटेंशन, राइट? आई एम द रिटेंशन प्रोडक्ट मैनेजर. आई प्रपोज अ टास्क. आई प्रपोज दैट we can improve the retention because I see that other apps have also done it. Other apps similar in the similar space in the US have done it. Or I've read some blog, or I've read a book, and I say that humans are status seeking monkeys, whatever it is. So we should launch a leaderboard sort of a something, right? It's a blog which I read. Yeah, हाँ. it's a blog which I read by Eugene White. हाँ. And अगर आप देखोगे तो वेस्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स में लीडर बोर्ड है. सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट है, सिग्नलिंग Right. गेमिफिकेशन. हाँ हाँ Yeah. हाँ, So बिल्कुल. that's a good problem discovery via a product manager, है ठीक ना? है. मैंने नहीं करी थी, मेरे साथ और भी लोग थे जिन्होंने करी, है ना? कि दे फिगर्ड आउट कि यार हमें लीडर बोर्ड करना चाहिए. देन हाँ. मेरा काम था कि यार एक कॉन्सेप्ट नोट बनाना, पीआर फैक्ट बनाना, राइट? एक कॉन्सेप्ट नोट बनाना, और वो कॉन्सेप्ट नोट जाके पिच करना सीनियर स्टेक होल्डर्स को. यू नीड टू गेट देयर बाय. या एक सेकंड, पीआर फैक्ट बोल रहा है या पीआर एफएक्यू? फैक्ट, पीआर एफएक्यू. पीआर एफएक्यू. ओके ओके ओके. ओके गाइस, फॉर ऑल द एडीएचडीज आउट देयर, प्लीज पीआर एफएक्यू पे लॉन्च कर जा 2 सेकंड और फिर वापस चले जा. पीआर एफएक्यू, आई नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज अ पीआर एफएक्यू. वेरी क्विकली, यस, फॉर द बेनिफिट ऑफ यार पीपल लिसनिंग. हाँ. Yeah, product requirement, guys. Product requirements, just for everybody else on there. हाँ तो PRFAQ is frequently asked questions on those. करेक्ट. तो यार तो ये तो हम लोग बताते उसे बताते. कॉन्सेप्ट नोट बोलते थे. हाँ. इट्स अ फिलोसफी विच हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम Amazon. Amazon में before anything is gets into development, they write a PR fact. It's more like a press release, like not more than a 1 or 2 pager about Yeah. what is the problem which we are addressing, what is the solution, why should we do it now, what is the potential impact, and if possible, can you also give me a quick UI wireframe, pen and paper wireframe also, right? So that document is used to convince senior stakeholders for their buy-in. अब अगर मेरे को लीडर बोर्ड बनाना है, तो मुझे जाके अपने सीईओस को पिच करना पड़ेगा कि यार दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हिच वी आर फेसिंग. This is an opportunity, sorry, which we have, and if we were to build a leaderboard, we would be able to get in this much of we would be able to make this much amount of impact in dollars if you can, or in rupees if you can. If not, you can give a t-shirt sizing. The impact will be Excel, right? Whatever it is, and you pitch it up to the senior stakeholders. They give you a buy-in. That's when your job to convince your pod or your team starts, right? तो आपको senior stakeholder से मिल गया buy-in. अब आप क्या करोगे? अब आप इंजीनियर और डिजाइनर आपके साथ अटैच हो जाएंगे. आपको उनको क्या कहते हैं, उनको एक पीआर फैक्ट का वॉक थ्रू देना पड़ेगा कि हमें ये करने वाले हैं अगले स्प्रिंट में, वट एवर इट इज, हाउ मेनी वट एवर नंबर ऑफ स्प्रिंट्स इट टेक्स, राइट? And everyone agrees. They will ask you question. They will post question on the Google Doc or whatever document you're maintaining. You will respond. Everyone will come to a consensus that okay, Ankit is the product manager who's going to build it. Now Ankit starts writing a PRD, right? And PRD, you are writing user stories, reporting requirement, acceptance criteria, etc., right? And that PRD is more like a live document. Developers are also reading it. They're also giving their inputs. And let's say you give a timeline here, by next week I need to finish the PRD. I've completed the PRD. I give a walkthrough to the tech team. They agree because they've already read the PRD. We are working in an agile environment, and then they start. Then they give their timelines, and that's how you essentially launch a leaderboard. While the developers are developing it, you have a QA engineer who's helping you writing the test Yes. cases. Test Test cases. cases. Correct. You also have a product analytics manager or a product analyst who is वो पीछे से Setting डेटा up the पाइपलाइन, हाँ, measurement system. हाँ, टैबलो या कोई भी विजुअलाइजेशन जो है टूल है, उस पर वो अपना काम कर रहा है. एंड ऑन डे 0 व्हेन द फीचर इज लॉन्च्ड, you start seeing the reports of it, right?
Makes sense. Okay, so just in a nutshell, and I'm going to like translate this into very accessible language that like bhale wo developer ho ya designer ho ya somebody from a different industry or a different profession ho, they can get into it. So you wanted to like you read something about like कि ये feature अगर हम डालेंगे, it would be great for us. Like leaderboard का feature, you read some article from somebody who's written this psychological fact about human You read beings, right? article, And I you read article, and you also saw examples of it, right? Some Yeah, validation. sure. Like, I mean, for example, like I can quote a book here, Dan Ariely, any book Mhm. by Dan Ariely, but Correct. like predictably irrational, right? Where like you see that when you see a door that is closing, you are more inclined to go behind that door. There are many experiments that have proven it. So, which is why you have these, these pop-ups in a game. When you close a Correct. game, you're like, are you sure you want to quit? And usi pe, I mean, I personally, because maybe I'm neurodivergent that way, मेरे को कभी फर्क नहीं पड़ा मेरे को बंद करना मेरे को नहीं बंद करना नहीं बंद करना but I know for a fact that from data it is like 70-80% people don't close it. Correct. And ये मैंने Reddit पे भी बहुत देखा ठीक है तो suppose वो feature तेरे को डालना है and then you have to I mean yes at the end of the day it is like a very personal choice. It's an idea that you are getting in your head but then you are working very hard to make sure that it's not just because it's an idea in your head that should get executed. And again we'll come back to this point also. So then what you do is you go out and you because you have been given this you've made the structure. And again to the ADHD people listening here, at least this helps me. I know there are like 4 different broad kinds of ADHD and that ADHD is a spectrum. For me this really helps. Having structure really helps. I mean I'm glad nobody can see my desk right now because it's a mess. But if I have like a framework, it helps. So what like step one, think of a cool idea. Step two, organize the justification for doing that idea or not doing that idea into like a clean structure. What do I mean by clean? Something that's legible and to others and it's easily translatable across hierarchies. Like for example, your leaders will barely have 1 or 2 minutes to read it. Your managers might have 5 to 10 minutes to read it and listen to you explain it. And your teammates will have longer, and their questions will also be different. Like, yeah, go on. So I have I read somewhere that if you're a PM, right, you need to build something which the founders are ready to fund, your developers are ready to build, and users are ready to use. As simple as I've that. heard this one as well. Yeah, this is wonderful. Actually, this depends on your company. Okay. Correct. So I'll tell you why. Because at Adobe, what we do is we believe in one simple motto. Like if you are a PM at Adobe, you have a much easier job for a lot of things because you just have one simple motto: keep the user at the center. All else will follow, right? So anyway, so I didn't want to like shamelessly plug in Adobe here, but एक एक चीज मेरे को हाँ ना एक चीज और याद आई मैं एक कि बार अब फ्रेमवर्क तेरा कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि कर मतलब लो कंप्लीट कर जनता लो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी और हाँ। मतलब मैं खुद भूल चुका हूँ आधा तो ठीक है तो थिंक ऑफ कूल आइडिया थिंक ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर आइडिया कम्युनिकेट अप विच इज लीडर्स को बताना कि जल्दी से फटाफट कि इससे फायदा क्या होगा कम्युनिकेट मिडिल मतलब बाकी मैनेजर्स को इंजीनियरिंग मैनेजर्स से रिसोर्स क्यों लेना है बताना कम्युनिकेट डाउन विच इज गेट पीपल एक्साइटेड अबाउट इट कि इससे बहुत मजा आएगा राइट एंड देन सेट अप दो सिस्टम्स फॉर इट ठीक है सो दैट्स इन अ नटशेल व्हाट यू आर टॉकिंग True, अब true. तू like अपना बता and then we now finally go back to something that I've been itching to go back to, which is the different kinds of product managers. Yeah, I think you summarized it well here. What I like when you said about Adobe, one practice which I've read in a book, I don't remember the book, Huh. but in the early days of Amazon, I'm not sure if they still follow it. They would keep a chair empty in a meeting, and that chair signified the user, right? So you're always आजकल तो नहीं thinking होगा about this. बिल्डिंग में जगह ही नहीं होती लोगों के लिए जी मुझे तूने नहीं मीटिंग रूम में खाली चेयर देखा होगा भाई हम दूसरे हाँ, मीटिंग रूम से चेयर लेके आते हैं वो इसमें 90s में जगह रही होगी. रही होगी वैसे हाँ but yeah that's good so the Right. chair signifies the user. Yeah, you always have to think of the user, right? You have to let go of your ego, or you'll have to let go of the solution which you are over indexing in your head. Will Very the like भाई एंड पता है और कोई तुम्हें ह्यूमिलिटी सिखाए ना सिखाए एंड because there is this anecdote okay कि like people who have recently become parents like if you become a mother or if you become a father you become a better product manager why because you learn humility तुम जो भी सोचते हो ना कि मेरा बच्चा ऐसा होगा वैसा होगा भाई वो लिटरली मतलब I don't want to use the crude term here but defecate कर देता है तुम्हारे ड्रीम्स पे तो for our Hindi speakers the word starts with an H. So, and like it's the day that comes just before Valentine's Day, the same day. So
So yeah, that should be hint enough for people to like find it funny. Okay, so now tell me, Barry, what are the different kinds of product managers? And personally, I'm asking you this from a personal perspective as well. And we will start injecting ADHD into this conversation. I'm asking you personally because guys, this is like an offline conversation Barry and I had. So I was just telling him a few days ago कि यार मैं पहले business side में था, उसके बाद like मैं data analytics side में था, अब मैं डेवलपर साइड में था. आई वाज अ डेवलपर जस्ट लाइक आई मीन आई वाज इन डेवलपमेंट फॉर लाइक अ फ्यू इयर्स एंड देन आई वाज लाइक एंड देन नाउ आई एम इन एमएलएआई. तो यार मेरे को तो प्रोडक्ट मैनेजर बन जाना चाहिए ना, क्योंकि मेरे पास तो सारी स्किल्स आ गई हैं जो जो प्रोडक्ट मैनेजर का चौकोन होता है या चतुर्कोण जो भी बोलते हैं, जो स्क्वायर होता है. तो जिनसे तुम इंटरेक्ट करते हो वो सारी स्किल्स तो मेरे पास हैं. व्हाट इज योर thought on that? And you said कि ऐसा नहीं होता, and I want to know why, because I know that a lot of people here, right? And it's not just ADHD maybe, but there is a higher propensity amongst people with ADHD to try out different things, because like we get bored very easily, right? And we get I mean, I'm not going to say we get distracted very easily. So ADHD is probably the worst named disease out there. Like it's sorry, I didn't mean to call it a disease, worst named condition out there. Like it's not that we have a deficit of attention, it's that we have a deficiency in regulating our attention. Because I am not on any specific medication for my ADHD, maybe some like to just like control it a little bit. But I'm finding this conversation so interesting that I'm literally not focusing on anything else. Like I haven't had breakfast today, for example. I'm really hungry, but I'm not being reminded of that. So it's not a deficit of attention. It's a deficit in regulating attention, right? So we do tend to like explore a lot of stuff. And I know, Barry, that you are more neurotypical and you have had a very similar journey. You have explored a lot of things in your like, which we'll discuss in the digression corner. So like, what about someone like me? Like I spent like 10 years of my career figuring out कि नहीं यार ये तो मेरे को नहीं पसंद है. I spent 2 years in, let's say, something in the, let's say I spent 2 years in core mechanical engineering. I was like नहीं यार ये नहीं होगा. I spent 6 months in consulting. I was like नहीं होगा. Then I spent like 4 years in Google, and even there I think in the 4 years I had like some 6 7 different roles, because I just used to jump from project to project, because I used to find things very, different things interesting. Then I went to different industries, right from there I went to anyway, like just I'm not trying to like sell myself here, guys. I'm just trying to give an example to those who have joined us, that I've done a lot of weird stuff, right? And so people with that diverse sort of an experience versus you are like a pure breed blue-blooded product manager, right from day zero. You have been like a PM, versus somebody who has come from all of these experiences, who has had like these lived experiences. How do these two stack up? What situations does this blue-blooded PM serve your purposes better? What situation does the learned and lived experiences PM serve better? What and where do we need both of them? Like how do they naturally come and mate? And तो तो बता देगा, बढ़िया आइडिया, अपन स्टार्टअप ही खोल लेंगे साथ में. हाँ, तो definitely I'm not a blue-blooded product manager as you're putting it. I transitioned from an operations background back in 2014 into product management, है ना. My 3 years. my first job out of college was product management. I left it because of peer pressure. I wanted to break into finance. I realized I like startups, so got a job as a operations manager at a Mumbai-based startup, and then I realized that let's get back into product, right? So yeah. Wait. So you got a job in product management right out of college. Something most I didn't people. get a job in product management. I just got a job in that company, and out of 200 people, 198 became SDEs, and they absorbed me as a business analyst in the product management team. तो बेसिकली And तू पीएम बन गया. तेरे को सबसे अपना सपना ऐसे प्लेट में मिला, एंड तूने उस पे वैलेंटाइंस डे का पहला वाला जो दिन होता है वो उस करा. टाइम पता नहीं था ना, उस टाइम अवेयरनेस ही नहीं थी प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल की. प्लस इन अ सर्विसेज कंपनी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड, राइट? आई आई मीन, अंडरस्टैंड. नहीं, मैं मजाक तो करना ही था, बट ऑन अ सीरियस नोट, बैरी लाइक वाओ. हाँ, फिर उसके बाद तू फाइनेंशियल ऑपरेशन में चला गया. फिर देन वापस प्रोडक्ट में आ गया. फिर कितने 2014 साल फाइनेंस ऑपरेशन में? 2 साल था ना तू? 3 साल? finance and operations for 2 years, and then finally got back into product at Tiny Owl, and it's a very interesting journey. I just
cold DM'd their customer services team that I'm looking for a product, क्योंकि उस टाइम LinkedIn था नहीं, उस टाइम मतलब LinkedIn था बट LinkedIn पे लोग उतनी जॉब्स नहीं डालते थे, प्लस उनकी वेबसाइट पे भी जॉब्स लिस्टेड नहीं थी, एंड आई जस्ट मैसेज्ड और ईमेल्ड देयर कस्टमर सर्विस, पीपल वुड यू नो ईमेल किया मेरा खाना कहाँ पे है। मैंने मेल किया कि बिकॉज इट्स टाइनी ऑल फूड ऑर्डरिंग ऐप, राइट? I सो know, I मेल remember. देम दैट आई एम लुकिंग आउट फॉर अ जॉब एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, ये मेरा सीवी है, एंड इट सो हैपेंड दैट at point of time, because of the series A funded startup, all the customer service mails were also sent to the CEO, Founders. Yeah, yeah, founder, yeah. and he saw it, and he was kind enough to give me a chance. That's how I broke into product, by sheer Wow. hustle. That Wow, was- man. And see, you use two words here that I hate, but you use them in a pure sense. So Correct. today, guys, we are going to launch into, it's the halfway mark, right? Yeah, we are at the halfway mark. We are going to launch into digression corner. I'm going to set a countdown timer for, बारी कितनी देर के लिए digress करना है? जितना तुम्हारी मर्जी यार। अब मेरी मर्जी नहीं है यार, शो रनर्स की मर्जी है. Uh, let me put in a 15-minute digression We because haven't discussed your question around what is the difference between, let's say, someone who's been a product manager throughout and someone who's come with a specialized experience in, let's say, development and then breaking into product. तो करेंगे. अभी डाइग्रेशन कॉर्नर के तू 14 सेकंड खा चुका है. हाँ, तो बताओ भाई। डाइग्रेशन कॉर्नर में वी वांट टू डिस्कस टू थिंग्स वेरी आई लव टू हेट ऑन. ठीक है. वन इज हसल, ओके, सही एंड बात। द अदर इज लिंक्डइन. सबसे पहले लिंक्डइन पे हेट करते हैं. तो करो मैं है। आपको एक बात बता, लाइक मैं लिंक्डइन पे मतलब बस जाता हूँ अपनी सीवीज अपडेट करने. तेरे कितने होंगे? आई थिंक 12-15 हजार फॉलोअर्स होंगे लिंक्डइन पे. मैं देखता नहीं, बट आई थिंक कम ही है, मेरे काम है, काफी कम है। मेरे भी, मेरे ऐसे 6-7 हजार ही है मेरे भी. ठीक है. हाँ। और मैं लिंक्डइन पे लिटरली बस इसलिए जाता हूँ जब मेरा कोई जॉब अपडेट होता है. सी गाइस, लेट इन एनीवन वाचिंग दिस, लिंक्डइन भारी ऑलरेडी हंस रहा है. लिंक्डइन पे सिर्फ दो कारण के लिए जाओ. जब तुम्हें अपने जॉब को लेकर डिप्रेस होना है, लिंक्डइन पे जाओ, क्योंकि तुम्हें हर लाइफ लाइफ को लेके डिप्रेस होना है तो लिंक्डइन पे जाओ। यार लाइफ को लेकर डिप्रेस होना है तो उसके लिए इंस्टाग्राम है ना ब्रो. लिंक्डइन क्यों जाएगा तू? अभी लाइफ को लिंक्डइन लेकर में डिप्रेस होना मतलब है, इंस्टाग्राम जाओ. जॉब को लेकर डिप्रेस होना है, लिंक्डइन पे जाओ. और अगर तुम्हें कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी करनी है, जैसे किसी कैपिटल हिल पे मार्च करना है या कोई प्रोटेस्ट करना है, तो ट्विटर पे जाओ. सो दीज आर लाइक थ्री वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स फॉर डूइंग दैट. बट if you want to learn in a kind, safe environment and listen to the voice of the people, you know the right platform to go to, and that is Thinkly. I am not being sponsored to say this, guys. मेरे को बिल्कुल पैसे नहीं मिलते. I love Thinkly. I love the community, and I love how they have created this space for not just for me. There are lots and lots. Barry, there is a product management community out there as well. Who and I'm sure you would like to watch their selections as well. So back to LinkedIn. Have you noticed this weird trend in LinkedIn that everybody on LinkedIn has this photo? कि कोई माइक लेके खड़ा है, कोई स्टेज पे खड़ा है, कोई पोडियम के सामने खड़ा है. मुझे पता क्या लगता है कि तुम कोई भी टॉक अटेंड करने चले जाओ, एंड जब जनता वहां से निकल जाए ना, अपने दोस्त को फोन पकड़ाओ, पोडियम के सामने माइक छीन के खड़े हो जाओ ऐसे करके, बस उस लिंक्डइन शॉट के लिए. लाइक व्हाट इज द डील? व्हाट इज इट? व्हाई आर देयर सो मेनी पीपल ऑन लिंक्डइन हु हैव दिस एज देयर फोटो? व्हाट्स गोइंग ऑन विद दैट? एवरीवन वांट्स टू बिकम अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स पता नहीं, बट इतना ज्ञान मतलब हर किसी. स्टेटस सीकिंग वाला है ना, जो यूजीन वाई ने बोला था, ह्यूमन बीइंग्स आर स्टेटस सीकिंग मंकीज। तो कहीं से तो स्टेटस चाहिए। And you think that by pretending to be somebody who, acha, this must be an offshoot of the सोशल influencer culture. सोशल अब तो सोशल इक्विटी भी है ना, फॉलोअर्स इज लाइक अ सोशल इक्विटी। जो पहले जो एक्चुअली आईएएस निकालने से या एनीवे एटसेट्रा कुछ अच्छा करने से या बिजनेस बड़ा करने से जो इक्विटी आती थी, अब वो फॉलोअर्स से भाई आ रही है। आईएएस निकालने से अभी भी इक्विटी आती है. ठीक है. आईएएस का कह गोइंग रहा हूँ रेट अभी भी कुछ आती है, स्टेट्स अभी में भी आती है। नेम दो स्टेट्स 5 करोड़ है. ठीक है. लेट मी नहीं, टेल मैं यू. तो कह ही रहा हूँ यार, वो आती है, मैं कह रहा हूँ अब नाउ वी हैव सोशल मीडिया एज वेल, राइट? योर फॉलोअर्स बिकम योर सोशल करेंसी। And I'm telling you, the root cause of all of this is the inability to do or understand mathematics. And this is probably because of our Indian education system. तुम जाओगे ना, मतलब and my wife loves Instagram. I sit with her sometimes. वो बहुत funny memes मुझे share करती है and मुझे inbox में भेजती है. And फिर वो अपने phone में, अपने inbox में मेरा चार्ट वाला विंडो खोल के दिखाती है, देखो तुम्हें ये भेजा. मैंने कहा चलो साथ में देख लेते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम मैं नहीं खोलता. बिकॉज गाइस, एज अ वार्निंग टू एवरीबडी हु हैज एडीएचडी ऑन दिस पॉडकास्ट, I spend maybe 6 to 8 hours a year on Instagram. And that is from the one day that I open Instagram. So stay off from like Instagram if you want, because those platforms, जैसे बैरी जैसे ही प्रोडक्ट मैनेजर्स ने अपना दिमाग लगा के डिजाइन करा है कि यही सब यूजीन वाई जैसे लोगों की किताबें पढ़ के कि मैक्सिमम लोगों को इंस्टाग्राम में रखना कैसे है, मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम देर तक रखना कैसे है, एंड उनको टाइम कैसे वेस्ट करना है. सो या
बैरी मुझे एक और चीज बतानी, मैथ्स की जो मैं बात कर रहा था ना, लाइक यू विल सी दीज पीपल हु हैव 10,000 फॉलोअर्स, ठीक है। अब तुम बताओ 10,000 फॉलोअर्स हैं, डू द मैथ, उनके 10,000 फॉलोअर्स हैं, हाँ, उनके जो पोस्ट हैं उस पोस्ट में एवरेज नंबर ऑफ लाइक्स कितने होने चाहिए अगर 10,000 फॉलोअर्स है तो? मतलब लॉजिकली अगर तुम सोचो तो, नेटवर्क थ्योरी लगा लो, 1% मान लो। यार पता नहीं, मतलब हो सकता है दे आर पोस्टिंग एवरी डे एंड दे आर नॉट पोस्टिंग क्वालिटी एंड देन दे आर गेटिंग 10,000, तो लाइक्स कम आएंगे। बट इफ समवन लाइक लेनी रचिट्सकी इज पोस्टिंग और श्रेयस दोषी इज पोस्टिंग, दे पोस्ट रियली गुड कंटेंट। मेरे को दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे बता दियो, सजेस्ट लेनी रचेट्सकी कौन है एंड श्रेय। Lenny Kachitsky is a was a product leader at Airbnb. अच्छा, During post-COVID, during COVID, he started writing on his blog and started writing on Twitter. He was already on Twitter, but Twitter से काफी famous हो गया, and then he started writing his Substack, and that became a really, let's say, a really followed sort of a blog of for product managers, right? फुल Now इंडिया में ना, he has a दूसरा full-fledged श्रेयस business दोषी। now. There's a podcast, Lenny's podcast. There's Lenny's community. तो ठीक है, काफी है ना. Same with Shreyas Doshi. Shreyas Doshi has great experience in product management. Stripe, Google, etc. Was a product leader there. He started writing on Twitter. तो काफी लोग उसे follow करने लगे. Right now he's full-fledgedly into teaching and writing about product. okay. Anyway, Now coming talking back to about our hustle, conversation. yeah, we still have time, so let's come back to hustle, okay? लिंक्डइन की हमने बहुत ज्यादा बैंड, मतलब जरूरत नहीं यार लिंक्डइन की बैंड बजाने की, सबको पता है लिंक्डइन क्या है, इट्स फेक, इट्स लाइक इतना ज्यादा, वहां पे इतना ज्यादा कुछ हो गया है ना मोस्टली कि तो है 90% तो मतलब वही है. डाइल्यूटेड है मतलब। 90% तो आई वही है. मीन मेरे बर्थडे पे मेरे को अपने डैड से ऑटोमेटेड मैसेज आ रहा है कि कांग्रेस, नहीं, मैंने अपना वो पोस्ट किया, सॉरी बर्थडे नहीं, मैंने अपना वो जॉब प्रमोशन, जॉब मेरे डैड से मुझे आया, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन फ्रॉम चंदन मुखर्जी। हम लाइक, आई एक्चुअली कॉल्ड हिम अप, आई एम लाइक व्हाट, ही इज लाइक कि मेरे को नोटिफिकेशन आया, मैंने बटन दबाया, चला गया। अब अब क्या हुआ, मैंने भी देखा कि मैंने फन फन के लिए देखा कि मैं भी यही करता हूँ, बटन दबा दबा के खेलता हूँ। तो मेरे को आपको बताना, किसी मतलब लाइक किसी किसी लोगों के ऐसे नाम होते हैं, जैसे जैसे श्रेयस दोषी रख लो एग्जाम्पल, श्रेयस शर्मा नाम है उसका सपोज, श्रेयस बीच में उसने ब्रैकेट्स में जॉय लिख दिया है, श्रेयस जॉय शर्मा या श्रेयस शर्मा जॉय, ठीक है। तो मेरे को आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन या वटेवर, मैंने बटन दबाया, मैंने बाद में जाके देखा कि रिप्लाई में उसे गया है, थैंक यू श्रेयस शर्मा जॉय। तो आई एम लाइक यार एआई यूज करो बट दिमाग से हाँ, तो करो, आर्टिफिशियल है वरना ना, इंटेलिजेंस तो है ही नहीं। बाकी मेरे को यार हसल पे बात करनी है बैरी, मतलब देखो यार, हसल इज अनदर वर्ड दैट हैज बिकम सुपर पोल्यूटेड। हाँ हाँ, लेट मी कम बैक टू, बिफोर वी गेट इनटू हसल, लेट मी कम बैक टू दिस, अगर तुम्हारे 10,000 फॉलोअर्स है ना, सिंपल मैथ टेल्स मी that your number of likes on each post, if it's around once a week छोड़ो, if it's once in like 3 days a week तक है, it should be between 70 to 130, very हम्म. very simple indicator। ठीक है. तुम्हारे तुम्हारे 10,000 फॉलोअर्स हैं, तुम्हारा प्रोफाइल 2 साल पुराना है, तुम्हारे 60-70 पोस्ट हैं, हर एक में 24, 30, 35 लाइक्स हैं, मतलब सीधी सी बात है भाई, तुमने एक कोई सर्विस ढूंढा है फ्रॉम सम कंट्री दैट आई विल नॉट नेम, बांग्लादेश, एंड वहां से तुमने तुमने वहां से अपने लाइक्स को फार्म करा है। आई थिंक इवन बांग्लादेश में लाइक फार्मिंग का रेट बढ़ गया है, तो पीपल आर गोइंग टू अदर कंट्रीज नाउ, इंडोनेशिया और वट एवर। दिस इज हम्म. गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर लुकिंग टू स्केल इंडिया, बट मतलब लाइक फार्म्स खड़े कर सकते हैं इंडिया में, आई थिंक कर सकते हैं। सेकंड इज हसल कल्चर, यार बैरी व्हाट डू यू थिंक अबाउट हसल कल्चर, एंड अगेन दिस इज वेरी, आई वांट टू ब्रिंग इट बैक टू एडीएचडी and mental health in general, like before the show I got your like I did speak to you about sharing your own experiences in the journey of mental health। या ये हसल वर्ड ही जो है ना, मतलब इट हैज जस्ट बिकम एन अब्यूसिव वर्ड नाउ, कि ट्रू. हसल मतलब ये तुम्हें 90 घंटे हफ्ते में काम करना है, अपना फिजिकल हेल्थ नेग्लेक्ट करना है, खाना नहीं खाना है, वर्कआउट करना है, तो बहुत अनहेल्दी टाइप का बिल्कुल. हाँ. वर्कआउट करना है। जॉनी ब्रावो उसको घूमते हुए देखता हूँ रोड पे, ऐसे बाल पूरे खड़े स्पाइक्स में, बॉडी ऊपर से बनी हुई, इतने इतने पतले पतले पैर, मतलब आई मीन दैट्स बिकॉज लाइक देयर हसलिंग राइट, बिकॉज दे आर वाचिंग ऑल दीज एंड्रयू टट्टे और समथिंग नाम है उस बंदे का, राइट, इट इज प्रोनाउंस्ड एज टट्टे और आई डोंट नो हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड, जो रोगान और ऐसे ऐसे लोग हैं। तो उनको देख के दीज पीपल लाइक देर लाइक ईट बीफ, ईट मीट, वर्कआउट, वेजिटेरियन, खाने से कुछ नहीं होगा, इंडियंस पतले हैं उनकी तोंद है क्योंकि वो वेजिटेरियंस है। आई डोंट गेट एनी ऑफ दैट। सो हसल के नाम पे इट हैज जस्ट बिकम दिस बुलशिट वे ऑफ सेलिंग दूसरा देयर कंटेंट है बेसिकली. और कंटेंट।
हाँ। बस it's यार just फंडा वो है कि हसल कर रहे हो तो करो, बट रोमांटिसाइज मत करो। मतलब ये नहीं हर जगह बताओ कि ये चीज करनी चाहिए, लाइक राइट वो। and you are one in a million, right? If you have succeeded, matlab, like for example, how many people, like okay, first of all, I want to get into, तुमने romanticize बोला इसलिए I want to get into the story. तुमने Amazon भी बोला, तुमने romanticize भी बोला. How many people who are listening know that, like for first of all, how many people who are listening think that Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Jobs, all of these people, Sergey Brin, Larry Page, they are self-made billionaires. And I'm telling you, everybody thinks that these people are self-made billionaires, but they haven't gone and fact checked. मेरे को हम्म। आगे बोलते तुम्हें पता है स्टीव जॉब्स वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, तुम्हें पता है बिल गेट्स वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। मैंने कहा भाई, नहीं भाई। हाँ। गेट्स वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, आई थिंक ही वेंट टू कैलटेक या स्टैनफोर्ड, बहुत ही किसी अच्छे कॉलेज का, कैलटेक ही होगा पता नहीं, ही वेंट टू सम प्रिंसटन भी हो सकता है, आई फॉरगेट द फैक्ट्स। He went to some really good college, and that eventually it means he could afford that college, number one. And his parents bought him a computer when a computer was the size of a garage, and हम्म। it used to cost $200,000, जो 1980s में is today's equivalent of, I don't know, $250,000 at least to $500,000 at least. So my point is he came from a rich family. Jeff Bezos का जो seed fund था $300,000 का, उसके parents ने दिया था. His parents gave him a guilt-free, interest-free seed funding loan to हम्म। start startup, and $300,000 in 1990 would be the equivalent of $2 million today, or even more. Do the math. So we need to understand that, like, these are people who are. I'm not saying कि इन्होंने कुछ नहीं किया या इनमें मतलब there's no credit to them, but don't go about believing these Jack in the Beanstalk stories कि तुमने ऐसे beanstalk फेंक दिए and तुम उड़ गए उसके साथ. Elon Musk's father has an emerald farm, dude. Like he had an emerald mine. मतलब यूएस। तुम्हारे पास emeralds हैं जो तुम बेच रहे हो उसमें ना, साउथ अफ्रीका में. So उसके ऊपर तुम खड़े हो. So don't think that by going into like a job and working 70 hours a week, and क्योंकि उससे क्या होता है ना, लोग ये सब करते हैं, फिर अपने हेल्थ को रुइन करते हैं, अपने करेक्ट। को रुइन करते हैं. And especially people with mental health, right? People with mental health issues. See, everybody in the world has a probability of mental health issues, simply because as human beings we carry genetic trauma, right? Because as human beings हमारे हमारी हिस्ट्री में ही वॉर्स है, राइट? एंड वॉर का मतलब क्या है? वॉर में क्या होता है? मर्डर होता है, फायर होता है, रेप होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, एंड ऑल ऑफ दैट ट्रॉमा जो सर्वाइवर्स होते हैं ना, दे कैरी इट. सर्वाइवर तरफ होते हैं ना, मारने वाले भी होते हैं, मरने वाले भी होते हैं, वो हमारे जीन्स में है. वी हैव दैट. वी एवरीबडी इज केपेबल ऑफ डेवलपिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, एवरीबडी. जैसे आपको पता होगा ना, साइकोपैथ होता है, सोशियोपैथ होता है. साइकोपैथ आपका जेनेटिक होता है, सोशियोपैथ आपका सोशल होता है, बिकॉज ऑफ द वे दे आर रेज्ड इन दैट ट्रॉमेटिक एनवायरनमेंट. सो ये जो हसल कल्चर है, ये नारायण मूर्ति के जो स्टूपिड कमेंट्स हैं कि 70 आवर्स अ वीक वर्क करो और उससे इंडिया आगे बढ़ जाएगा. भाई अपना अपना है यार वो तो, मतलब यार तुम कितना भी काम करो, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी मैटर करती है. इंडिया की लो प्रोडक्टिविटी है. बाय द वे, अगेन आई वांट टू डिबंक अ फैक्ट ऑन दिस. आई थिंक आई हैव डन दिस बिफोर. India ranks very low in productivity, not because we don't work enough or we are not good enough. It's because 50% of our population, 9% of 50% of our population is allowed to work. हमारा 50% population is female, right? Only 9% of Indian females are allowed to work. More than like दो तीन साल जो सब करते हैं शादी वादी के बाद, सबको रोक दिया जाता है, because इंडिया में for status women are not allowed to work. And this is lower than Bangladesh. Bangladesh में it's 13%. Indonesia में it is 15%. The numbers ऊपर नीचे हैं, but एग्जैक्ट नहीं है वो. बाद में मेरे पीछे मत पड़ना कि भाई तूने गलत नंबर बोले, बट मोटा मोटा बॉल पार्क है. एंड दिस इज व्हाई द प्रोडक्टिविटी इज सो लो. सो लाइक हसल कल्चर पे मेरा काफी लंबा रैंट चला है, बट गाइस, हसल कल्चर डजंट मीन you are like making yourself unhealthy. Hustle means you do whatever it takes to get a job done. If you're a product manager, you go up वो इंजीनियर के साथ भले बैठो. एंड दिस इज, आई नो दिस स्टोरी फ्रॉम बैरीज एक्सपीरियंस, कि भाई तुम रात रात इंजीनियर्स के साथ बैठे हो समझने के लिए कि भाई ये फीचर क्यों नहीं चल सकता, ये डिप्लॉय क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्या बग्स हैं. यू हैव डन दैट. दैट आई फील is more hustle than just sending an email to somebody and getting the job. वो तो पता है तुम्हारी स्टोरी सुन के कोई डिमिनिश कर देगा, अरे तुम्हें तो किस्मत चमक गई. नहीं, they don't know the journey you had at Tiny Owl, right? Even I didn't know you then. I saw you at the later stages when you were like already very successful. But you have told me this. You have told me that you have spent time understanding, and that is the hustle that I want to talk about. And anybody with ADHD, right? We have at least one thing, one superpower, and that is called hyper focus. हाइपर फोकस से क्या होता है कि हमारा सारा जो फोकस है, इट गेट्स अलाइंड इनटू वन थिंग फॉर अ रीजनेबली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो
न्यूरोटिपिकल्स का नहीं होता है. बट रिमेंबर, हाइपर फोकस इज अ डबल एज सोर्ड. आप अगर 3-4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे यूर हाइपर फोकसिंग, that But does leave you extremely exhausted after that. So yeah, plan your hyper focus. जैसे मेरा होता है ना, मेरा पीआरडी का डेडलाइन अगर है कि मुझे डिलीवर करना है फ्राइडे तक, मुझे पता है कि मेरा थर्सडे जाने वाला है, तो थर्सडे को मैं बैठूंगा, करूंगा सब कुछ. थर्सडे से पहले आई विल डू ऑल द टॉकिंग वाला थिंग, सारे इंजीनियर से बात करना, सारे प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करना, लीडरशिप से बात करना, मेल करना, वो सब मेल बाजी बाजी मैं पहले कर लूंगा. थर्सडे को मेरे को पता है कि रात के 10 बजे सब सो गए, मेरे 5 डॉग्स हैं, सब सो गए, वाइफ सो गई. फिर मैं बैठा सुबह तक, सारा खत्म करा, और मुझे पता है उसके बाद कि मुझे बस फ्राइडे शाम तक किसी तरह से खींचना, उसके बाद मैं पढ़ जाऊंगा 2 दिन. एंड correct. दैट्स हाउ आई एम यूजिंग दैट. बाकी हाँ, ओके, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन एट आवर डाइग्रेशन कॉर्नर. बैरी, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं यार, भाई हसल देखो यार, जो भी कर रहा है रोमांटिसाइज ना करे बस, बाकी तो ठीक है. हार्ड वर्क इज ऑब्वियसली अंडररेटेड, सो एनीवनस वर्किंग हार्ड, ग्रेट फॉर देम. You have to decide what you are comfortable with, right? It will come at the cost of your mental health, and it will come at the cost of a lot of other things as well, of you not able to spend time with your loved ones, etc., etc., which are important for which are, important for people in varying degree, right? So if someone is hustling, good for them. If it is not meant for you, don't do it. As simple as that. Yeah, and hustle ka bhi, it's like this again. I think science education is important. Like remembering your science education is also important. हमें बहुत पहले बता दिया था, there are no free lunches in life. And Hmm. food is very popular. True, हर true. चीज का ट्रेड ऑफ है. Trade तो off है. Yeah. तुम 4 पिलर्स हैं तुम्हारी लाइफ के, राइट? सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स एंड अक्वेंटेंसेस, एंड Mhm. वही बाकी तुम्हारा आउटसाइड वर्ल्ड का जो आता है, मनी बोलो, पावर बोलो बोलो. तुम एक में अगर तुम्हें एफर्ट ज्यादा डालना है, दूसरे से कम होगा ही होगा. एंड यू हैव टू टेक दोज कॉल्स, यू हैव टू बी अवेयर एंड टेक दोज कॉल्स. ये नहीं कि भाई मैं 5 साल से इतना मतलब कुछ नहीं मिला ग्राइंड है, कर रहा हूँ, मुझे कुछ सब नहीं कुछ मिला. मिला है. And you can't become bitter about it, right? You can't do those things. You have to be very cognizant of those choices. ठीक है. So now the thing that I've been waiting for the most, different kinds of product managers. बताओ. एटलीस्ट जो जो मैंने देखा है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ना बहुत ट्रांसफरेबल स्किल सेट है. At its heart, you are a problem solver. At its heart, you are someone who's a quick learner, right? You are empathetic with the users. That's why you're able to, probably think of a solution, or maybe, understand their problem statement better, right? So if someone is a product manager, and at least in India, most of the roles are general management. Most of the roles are, जो भी जितने भी roles ज़्यादातर general management है, problem solver वाले हैं, and getting things done with people, sort of roles हैं, right? So if you are in your early stages of your product management career, it's okay if you're transitioning from, maybe a B2C to a B2B. If you're transitioning from, let's say, a fintech to a gaming company, if you're transitioning from e-commerce to, let's say, a cloud telephony sort of a product manager. But once you've spent enough time in a particular role, you can start leveraging your experience, right? So जैसे अगर मैंने 6 या 7 साल गेमिंग प्रोडक्ट मैनेजर मैंने कर लिए हैं, आई विल बी रियली हाईली वैल्यूड, बिकॉज आई नो यार जो गेमिंग यूजर्स हैं वो कैसे, हाउ हाउ व्हाट इज देयर बिहेवियर, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द यूजर्स हु आर प्लेइंग अ लॉट ऑफ रियल मनी गेम्स और हाइपर कैजुअल गेम्स. सो डेफिनेटली आई स्टैंड एट अ गुड चांस ऑफ, लेट्स से, सक्सीडिंग इन दैट इंडस्ट्री. तो वो उस टाइप का स्पेशलाइजेशन एक होता है. दूसरा है, व्हाट इज सम स्किल सेट विच यू प्रोबेबली आर, which probably you have. Maybe I'm good at analytics. I'm really good at analytics, right? And there could be a company which is, looking out for someone who is, an analytics first product manager, right? Another example which I can think of is technical product managers, right? Most of the PMs will hire a generalist, but there would be certain role, let's say 1 or 2%, जहाँ पे the end user is a developer. So if someone has had prior engineering management experience, prior SDE experience, and they were a PM for a few years, right? They might be preferred for a technical product management role, because the end user is essentially the, let's say, software developer, right? Or let's say it's very intricate. You need to know about the architecture to a depth. So definitely they will value someone who comes with a, let's say, a tech product management experience, right? Okay. These are So the just to different call kinds it of. out, because a lot of our audience is devs. Hmm. The only advantage being like having a development experience for, like, let's say, landing a product management role is if the end product has a developer context. So this is a very important point to note. Being a good developer will not make you a good product manager. Correct, Because correct. that having good user empathy Empathy will make have, you a yeah. good product manager. Because problem solving, I'm guessing developers में होता ही है. Obviously, that's जी. why they're developers. ठीक है, got it. That makes sense. That makes a lot of sense now. और जैसे आजकल जो एटलीस्ट जो फ्रॉम अ ट्रेंड परस्पेक्टिव, इवन दो आई डोंट लाइक ट्रेंड्स, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर बिकमिंग
AI product managers in the West, right? So they are Yeah. upskilling themselves in AI and figuring out the use cases of AI जो उनके कंपनी या org में implement वो लोग कर सकते हैं, right? So they are now calling themselves an AI product manager, right? So I think वो wave थोड़ी इंडिया में भी आ रही है. I see at a few companies they are hiring for people who come with an AI experience, right? Or at least who want to grow into that role. Makes sense. I just wanted to ask you this question, like straight off. Two questions. One is like, how can, let's say, the developers in our audience improve their relationship with their PMs? And the second question is, do you think that someone with ADHD, and the specific set of challenges that it presents sometimes, uh, will find it harder to become a PM? Because, like, I think for someone with ADHD, development is still a better idea because you can hyper focus and get your work in. But like a product management seems like a very high touch, very distractible, very people focused environment. Do you think like it can still work? So whichever question you want, you can pick up first. So what is the first question? कि How can it develop? Like what are some examples of good PM dev relationships? Hmm. What are the good parts of it? What are some toxic things that can come into that relationship and how to avoid them? Yeah, if someone is an individual with ADHD working along with a PM, the best thing, and I keep recommending that, ask for clarity. That's the best way to work along with a product manager. Even though वो यार वो दोनों साइड से है, PM should also provide clarity. But if you are struggling a bit in finding what to do, right? Always ask for clarity. If let's say if a product manager has given you a PRD, you're not very clear about it, कि यार उतना मेरे को डिटेल चाहिए, then ask for a more detailed PRD. So it has to come from the PM also, that if I know, let's say if an individual or a developer in my team has ADHD, can he or she be empathetic enough? First of all, यार पहले तो empathy होनी चाहिए कि यार मेरे टीम में किसी को है ये चीज. Secondly, can I go in depth and provide them, let's say task by task of what is to be done? Can I provide them more clarity? It will only help me in becoming a better product manager, right? And time boxing, like ADHD people work very good with time boxes. Like Time boxing करेंगे. yeah. Okay. The other thing is like now you have told me that you yourself had some challenges with anxiety in your career. You went for therapy, unlike I think what 99.999% of the people in at least India who say कि अरे ये सब कुछ नहीं होता. पूजा करा लो या कसरत कर इग्नोर लो. कर But देते हैं, you पूजा actually वूजा went नहीं for होता है. therapy. लोग इग्नोर कर देते हैं बेसिकली. You actually did, and that's one of the other I think of course friendship is based on mutual respect, and हमारे बीच में तो कभी था ही नहीं. But this is one thing that really I really like to call out wherever I can, because you're very open about it also. So I mean, see, this is very similar, right? Like I mean, ADHD is an issue that affects your mental health and it affects your functioning. Anxiety is again something that affects your mental health and your functioning. I would even argue that for a PM, anxiety is a bigger stumbling block than ADHD. Because I mean, yeah, some people with ADHD have anxiety, but like it's not there. But as a PM, your anxiety must be crippling for you, right? Like you are meeting deadlines, you're talking to extremely high stakes movers and shakers, right? So how did you deal with that? When did you understand you had anxiety, and when did you realize कि नहीं भाई, I need help? मतलब मैं ऐसे नहीं हो रहा मेरे से. करेक्ट करेक्ट. नहीं, अच्छा क्वेश्चन है यार. यार पहले तो मुझे लगता था एंजाइटी सबको होती है. मुझे लगता वो था दिस इज एंशियसनेस है, बाय द वे गाइस, फॉर एवरीबॉडी लिसनिंग, जो सबको होता है ना, जो नॉर्मल है, इट इज एंशियसनेस. जो ये लास्ट एपिसोड में दृष्टि ने भी क्लैरिफाई किया था. बट हाँ, एंजाइटी इज वेयर इट स्टार्ट्स इंटरफेयरिंग विद योर फंक्शनिंग. एंशियसनेस है जो मेरे साथ इस पॉडकास्ट से पहले हो रहा था कि यार ये शर्ट पहनूं, मेरा कैसा लग रहा है, मेरे बाल ठीक नहीं हो रहे, व्हाटएवर. एंजाइटी इसकी मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूं, राइट? और मे बी यू कैन डिस्क्राइब इट बेटर. मेरे साथ यही होता था. तुमने सेकंड पार्ट बोला ना कि सॉर्ट ऑफ पैनिक अटैक्स, राइट? एंड ये तो नॉर्मल चीज है कि सभी के साथ होता होगा यार, इतना तो मतलब. बट देन हसल कल्चर. हसल कल्चर भी नहीं, पता नहीं वो जॉब की वजह से होता था या नहीं, हसल वर्क कल्चर ने इसको एनवायरनमेंट. नॉर्मलाइज कर लिया. हसल कल्चर ने कि ओरे ये तो हर साल होता है भाई, बियर पी ले, लेट जा. बट हाँ, सॉरी, गो ऑन, आई वोंट इंटरप्ट यू. हाँ, सॉरी. Anyway, हाँ. so my wife suggested, why don't you go for therapy, right? And that's when वेट, हु सजेस्टेड? wife suggested. You also suggested. गाइस, हाँ, तुमने सजेस्ट किया भाई, तुमने भी सजेस्ट किया. भाई तुम्हारी शादी हुई है 2020 में हुई है ना 20 तुम? हाँ. 20 में. हाँ, ओके, फिर. हाँ, तो यार थेरेपी से बहुत हेल्प मिली है. इन थेरेपी से बहुत हेल्प मिली है, दैट इन लिविंग विद एंजाइटी, राइट? You'll have to live with it. It's not going to go. And just coping and managing anxiety is what therapy has helped. And I think the same goes for like ADHD. So there'll be people out there, like for example, I give my example, Barry.
You knew me before I was diagnosed with it, and everybody just thought कि ये बंदा, I know there were like two sets of people. One set thought कि this guy is just high energy, weird, and too cutlet, whatever, and the other set of people who thought I was a cocaine addict simply because of the levels of energy I had. But after my diagnosis, I really could channelize that. So did you feel the same coming in? Because anxiety is actually useful also in a lot of cases. That makes you put like that extra attention to detail. That makes you extra thorough at times, and you can channelize that. Has that started happening for you? वो होता है एंजाइटी से। जो एक चीज जो मुझे होती थी, जो मैं पिछले क्वेश्चन का भी आंसर देना चाहता हूँ, कि वो कैटास्ट्रोफाइजिंग उसमें चले जाते थे। यार अब ये प्रोजेक्ट होगा नहीं तो क्या होगा, राइट, दुनिया खत्म हो जाएगी। बट ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं था। यू स्टार्ट अज्यूमिंग वर्स्ट, द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड, इफ आई डोंट रिस्पॉन्ड टू माई सीनियर्स क्या होगा यार। सो दैट वुड लाइक आई वुड ओवर थिंक ऑब्वियसली, और कुछ होता नहीं था। एंड थेरेपी हेल्प मी इन लिविंग विद दीज थिंग्स, राइट। नाउ जो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? तुम्हें थेरेपी के लिए किसने पहले बोला, मैंने या तुम्हारी वाइफ ने? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन। अभी जो लास्ट क्वेश्चन पूछा वो क्या था? तुमने चैनलाइज कैसे किया इस एंजाइटी को? यार चैनलाइज करने का वही है कि पहले तो यार आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, राइट। चैनलाइज करने बाय का द वही वे वी आर एट आवर लास्ट मिनट, ओके, सो अच्छे से नटशेल में रैप कर दो, देन वी विल कंक्लूड। one thing which I've realized, right, मतलब at least it happens with me, right, and it happens with me, मतलब वो channelize करने का वही था यार, कि जो भी तुम सोच रहे हो, right, therapy really helped me in मैं how do I put it, how do I articulate? डोंट वरी अबाउट इट, एंग्शियस मत हो, नहीं नहीं, मैं anxious नहीं हूँ। आराम से, आराम से बोल। नहीं, आराम। therapy definitely helped me in becoming more calm, right, which definitely helped me in at least sticking to projects or sticking to the tasks at hand जो पहले मेरे को overwhelming लगते थे, वो ओवरवेलमिंग लगने कम हो गए। एंड दैट रियली हेल्प मी। अब मुझे ये नहीं पता मैं चैनलाइज कैसे किया, आई डोंट नो द साइकोलॉजिकल प्रोसेस बिहाइंड इट, बट डेफिनेटली थेरेपी हियर हेल्प मी यार। वन थिंग दैट आई कैन शेयर फ्रॉम माय थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंसेस, सबसे पहले तो ये फायदा होता है कि तुम्हें ये पता चलता है कि भाई मतलब ये नॉर्मल है, मतलब करेक्ट, नॉर्मल इन नॉर्मल द है। सेंस कि मतलब जैसे होता है कि ये प्रोजेक्ट नहीं होगा तो, ये मेरे साथ होता है, पर ये प्रोजेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, गोली थोड़ी, मतलब यार गोली थोड़ी मार देगा यार कोई। अरे हाँ, ठीक है, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, जॉब चली जाएगी, हाँ चली जाएगी, एक और मिल जाएगी। आई नो दैट्स आल्सो नॉट गुड, दैट्स वो ओवर भी नहीं करेक्टिंग। होता, वो भी नहीं होता। वी अज्यूम द वर्स्ट आउटकम, You राइट। assume the worst because हम अपना वैलिडेशन जो है, एंड अगेन हसल कल्चर, राइट, हसल कल्चर में यार तुम्हारी जो वैल्यू है, ये मेरी जो वैल्यू है, इट मेक्स अस बिलीव दैट आवर वैल्यू इज जस्ट आवर सैलरी, एंड दैट नंबर जो एलपीए का नंबर है ना। आइडेंटिफिकेशन इज बीइंग, कि वी आर द, आई एम द डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट, आई एम अ सीनियर पीएम, वो मेरी आइडेंटिटी है। तो वी स्टिक टू आवर, वी ट्राई टू क्लिंग टू आवर आइडेंटिटी, सो टू से, एंड राइट। इससे बेवकूफ भी बनाया जाता है ना, लाइक दैट्स हाउ दे, लाइक फॉर एग्जांपल पैसा नहीं बढ़ाएंगे, टाइटल चेंज कर देंगे, तो पीपरा लगेगा, "ओ, देखो मेरा टाइटल चेंज हो वो गया तो चलो दुनिया कॉर्पोरेट का है, बट यू आर एटलीस्ट, यू शुड बी कॉग्निजेंट कि दैट्स नॉट योर ओनली आइडेंटिटी, यू हैव में।" आइडेंटिटीज आउटसाइड ऑफ वर्क एज वेल, राइट। Absolutely. Barry, it was wonderful having you on the show. We are on time, sorry, so we will have to go. But I think like if you are in for it, we can definitely have you in for a second session where we discuss like more of this, more of a journey, more product management, and ठीक है, get into like your new journey as a musician, singer, and songwriter. ठीक है। Thank you so much for your time, and thank the wonderful folks at Thinkly and my wonderful producers Rahila and Ashwarya for this. बाय गाइस। Bye.